एटी पिला माने आमे जिबा किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को जोड़ा कि इंग्रजी एग्जाम पे कि मोस्ट सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो सब पिला माने जॉइन हे जिबे लाइव चैट बॉक्स अछि सब पिला माने उत्तर टिकु देबे जय जगन्नाथ राधा राधा जय हनुमान पिला माने तो एटी तुम सामने इंग्रजी रो किछि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्रथम प्रश्न उत्तर शो करूछि किंतु आउ प्रश्न उत्तर शो करिवो नाही तो एई क्वेश्चन पिला माने परीक्षा रे आसला बलिया प्रश्न हम इंग्रजी रो 38 टी एमसीक्यू पढिबो हम चेष्टा करबा 38 टी एमसीक्यू रो 38 टी आनिबा कना ग्रामर 15 टी छाडी देले आउ प्राय पिला माने हमर पढि जाउछि हमर केतडी आउ जति गुडा रहिला माने 22 टी पाका पाकी कि 23 टी खंडे 23 टी पिला माने हमर पढि जाउछि प्रोज रो एमसीक्यू पोएट रो एमसीक्यू एवं नॉन डिटेल एमसीक्यू हम चेष्टा करबा सब गुडा रे पूरा परफेक्ट उत्तर करबा देखो एटी हाउ डिड द नरेटर ग्रैंडमदर सेलिब्रेट हिज होम कमिंग तो जब प्रथम प्रश्न उत्तर तुम शो कर देछि तथा बुझे दोछि हाउ डिड द नरेटर राइटर को जेजेमा किपरि सेलिब्रेशन करिथिले जते बळे कोन हिच पिले माने ना ततले राइटर आसीथिले पिले केमिति बाय सिंगिंग ड्रमिंग बाजा बजै की गीत गाय की पिले डिटेल्स बुझेबेनी काना परीक्षा और कम समय तो देखिबा इटी पिले नेक्स्ट क्वेश्चन what was the unusual about the grandmother's behavior on the evening of the narrator returns तो narrator आसीथिले राइटर पुष्पन सिंह जतला फेरिथिले संध्या बेले को गोटे असाधारण व्यवहार माने अभाग्य व्यवहार राइटर को जजमा करथिले पिले सी डिड नॉट प्रे सी टोटल प्रार्थना करनथिले सी वाज वेरी अपसेट सी बहुत अपसेट थिले सी स्टार्टेड कुकिंग ना से खाद्य तयारी करिया लागिले रोसई करिया लागिले ना सी लेफ्ट द हाउस ना से घर छाड़ी पळेले एटा ऑब्वियसली पिला सी डिड नॉट प्रे जतले राइटर आसीथिले सी टोटल प्रार्थना करिया भूली जाइथिला जो लोक दिन राति आज एते वर्ष बंची प्रार्थना करथला किंतु तम नाती आसला परे प्रार्थना करिवाटा को भूली जाइथिले नेक्स्ट देखंतु व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडमदर व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडमदर द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द सेलिब्रेशन कोन घटितला राइटर को जेजमांकर सेलिब्रेशन न आसंता सकाळे आज सेलिब्रेशन कले तापर सकाळे कोन घटितला सी स्टार्टेड ए न्यू हॉबी माने से गोटे नुवा किछि कार्य करिथिले सी वाज टेकन इन व्हाट विथ ए माइल्ड फीवर ता गोटे असुस्थता आइतला टिके ठंडा ज्वर होइतला सी लेफ्ट द हाउस ना से घर छाडी दिथले सी विजिटेड द टेंपल ना से मंदिर जाइतले आंसर जो सी वाज टेकन इल विथ ए माइल्ड फीवर नेक्स्ट हो जिबा What did the grandmother believe? What did the grandmother believe about her illness? राइटर का जजमा कौन विश्वास करुतले तांकर असुस्थता पाई कि इट वाज ए माइनर इशू राइटर को ग्रैंडमदर बिलीव करथले तांका जजमा को असुस्थता आइतला तो जजमा को बोले छोटिया केस गोटे ना इट वुड बी क्योर्ड क्विकली माने से बहुत शीघ्र भल होइजबे इट वाज ए साइन दैट हर एंड वाज नियर ये गोटे लक्षण थिला जे तांकर मृत्यु शेष पाखि आसला इट वाज अनरिलेटेड टू हर हेल्थ एटा आंसर जे बोले इट वाज अ साइन दैट हर एंड वाज माने ता एटा गोटे लक्षण देखुतला जे तांकर मृत्यु बहुत पाखि आसला नेक्स्ट हो जिबा कोन रहि छिले माने एठी व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडमदर जस्ट बिफोर शी पास्ड अवे कोन घटितला जेतले ग्रैंडमदर मरी गले सेतबेले सी वेंट आउटसाइड से बाहर थी हर लिप स्टॉप मूविंग एट द रोजारी फेट ना तांको ओठ रही गला এবং হাতের ধরতে মারি গলি পড়িলা সি বেন সিঙ্গিং না সি গীত আরম্ভ গায়ক আরম্ভ কলে না সি ফেল আসলে না সি সোই পড়িলে आंसर है जो ऑप्शन बी जो माने मारुचंती हर लिप स्टॉप तांकर ओठ रही गला मूविंग एंड रोजारी फेल माने तांकर रोजारी हाथ रे मारीटा गली पड़ला देखिया तापर कोन अछि बेले एडी तुम सामने बेले माने बेटर वे रे करबा एग्जाम पे बेले हाउ डिड द ग्रैंडमदर spend her time how did the grandmother spend her last hours तो राइटर कहउचंदी हाउ डिड द ग्रैंडमदर राइटर को जजमा नका शेष घंटाटा केमिति स्पेंड करिथिले टॉकिंग टू फैमिली मेंबर्स से ताका परिवार सहित कथावार्ता है कि ना टॉकिंग टू वाचिंग टेलीविजन ना टीवी देखले ना प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स ना प्रार्थना करूथले ताको माळी जपुथले ना राइटिंग किछि लेटर माने चिट्ठी लिखुथले आंसर है जो पहले प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स माने से प्रार्थना करूथले एवं आ को करथले ना माळी जपुथले तापर देखिया कोन अछि हावाज ग्रैंडमदर बॉडी राइटर का जजमांकर हावाज ग्रैंडमदर्स बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर द फनरेल राइटर का जजमांकर बॉडी को होली प्रिपेयर होतला जतला मृत्यु आड़ को जिवा पई शी वाज ब्यूरिड इन ए ग्रेव ना तांको गोटे कवर दिया जाउतला शी वाज वार्प्ड इन ए रेड सराउंड एंड लेड ऑन द ग्राउंड तांको गोटे नाली रंगर जो हमर बेडशीट कहबा घोड़े देकी तळे को सोई देथिले ना शी वाज क्रिमिटेड इमीडिएटली ना शी वाज प्लेस्ड इन ए कॉफिन ना तांको कॉफिन भीतर रखा जायतला आंसर इज ऑप्शन बी शी वाज वार्प्ड इन ए रेड सराउंड and laid on the ground next देखिबा
कौन अच्छी बोले What did the narrator's family find when they went to collect the grandmother's body for cremation? What did the narrator family, narrator का family, writer का जजमान का family find माने कौन पाइଥିଲେ? They went to collect जेतବେଳେ ସେମାନେ collect କରିବାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ the grandmother body. His room was empty, the room was full of sparrow, the room was flooded, the sparrow was chirping loudly. कौन पाइଥିଲେ ना आंसर जो the room was full of sparrow. ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର का जजमान का बॉडी को ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଘର ଚଟିଆ ଗୁଡା ରୁମ ରେ ଫୁଲାପ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन how did sparrow react to bread crumbs thrown there to them ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଟି ଗୁଡା ସବୁ ପପଡା ହେଇଥିଲା ତ ଘର ଚଟିଆ ମାନେ କୋଭଳି ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ they eagerly at the crumbs they ignored on the breads they scattered the bread crumbs they ate the crumbs quickly answer is they ignored the bread crumbs ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଡିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କଲେ କାହିଁକି ନା ରାଇଟରଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ବେଲେ क्वेश्चन कोन अछि ना व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड क्रम्स कोन घटितला सेही जो रुटी रो खंड खंड पाउरुटी रो आफ्टर द स्पैरो लेफ्ट जितबेले घर चटिया वाले पळैले they were eaten by other animals they were shipped into the dustbin they were left untouched they were collected by the narrators it answer is जो कोन they were shipped into the dustbin से माने कोन कले ना डस्टबिन में पकै दिला तापर देखिया बेले माने कोन हला how did the grandmother's absence affect the sparrow राइटर को जजमान कर एब्सेंस रे स्पैरो मानकर कोन अफेक्ट पकैतला दे बिकेम मोर एक्टिव दे फ्लू अवेक एंड क्वाइटली दे कंटिन्यू टू गैदर अराउंड दे स्टॉप्ड कमिंग ऑल टुगेदर कहला राइटर को जजमान तल मरि गले स्पैरो मान कोन कले दे फ्लू अवेक क्वाइटली से माने शांत भाव रे उड़ी चली गले नेक्स्ट देखिबा कोन है जिबले एडी What did the grandmother reaction to the narrator or dispatcher reveal about her character? Okay, she was very emotional. She was deeply devoted and focused on her prayers. She was indifferent to the separation. She was eager to see him go. Answer is she was deeply devoted, focused on her prayers. Next question. 62 number देछि. How did the grandmother behavior? Writer का जजमान करो जो बिहेवियर टा कंट्रैक्ट विथ हर यूजुअल हैबिट ड्यूरिंग हिर फाइनल सेलिब्रेशन तांकर जो प्रथम लास्ट सेलिब्रेशन तला तो राइटर का जजमान कर बिहेवियर टा केमति तला शी वाज लेस रिलीजियस एंड मोर सेलिब्रेटिव शी वाज मोर रिजर्व्ड एंड क्वाइट शी वाज मोर फोकस्ड ऑन हर प्रेयर्स शी एंगेज्ड इज मोर सोशल एक्टिविटी आंसर होची शी वाज लेस रिलीजियस धर्म कथा बेसी करू नथले माने प्रार्थना करू नथले किंतु सेलिब्रेट अधिक करूथले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिया पहले माने कोन अछि देखिबा What did the narrator family do after discovering the sparrows in the room? They chased the sparrow away. They decided to clean the room. They continue with the funeral arrangements. They took the sparrow and a new location. Answer होची they continue with the funeral arrangements. Next देखिबा 64 नंबर पे What does the narrator on reflection on his grandmother last moments reveal about his feelings towards her ହେଲା तो ताकर जो शेष मोमेंट रे कोन हितला her felt forget for not spending more time with her admire her devotion of tranquility he disappointed to her family action he was indifferent on her passing answer is he admire her devotion of tranquility okay 80 की क्वेश्चन पहले हम आलोचना कर दिबा पर आउट क्लास धन्यवाद थैंक यू जॉइन करा